अच्छा जी, गेमिंग और एनिमेशन की हम बात करेंगे। हमने जब पढ़ा था तब भी हम गेम डेवलपमेंट और एनिमेशन के भी डिग्री में मेजर्स होता है एक्चुअली NCA लाहौर में मल्टीमीडिया आर्ट्स में, और तब से हम यही बता रहे थे लोगों को कि दिस इज़ द फ्यूचर, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बता रहे थे तो किया क्यों नहीं? मैंने नहीं किया। पाकिस्तान में एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है और IT इंडस्ट्री की बरामदात में इजाफा जारी है, लेकिन एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का किरदार भी अब बहुत होता जा रहा है, और इस पर हाल ही में वर्कशॉप्स भी मुनक्किद हो रही हैं, और टोक्यो से पाकिस्तान आए हुए इस फील्ड के माहिरीन जो हैं वो इस वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं, और इसमें से एक माहिर हैं साइलस, और ये वार्नर मीडिया कार्टून नेटवर्क से भी मुंसलिक रह चुके हैं, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब इमरान अजहर जो क्रिएटिव पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम साइलस से बात करेंगे ऑल्सो बिकॉज हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। साइलस, please tell us what is intellectual property development in animation and gaming. We would like to understand this. Thing about intellectual property in animation is that that's something that you can own as a creator, as opposed to just outsource, just performing the work as a fee for service. Intellectual property is what we focus on because we want to own part of that property so that we can get residual payments whenever it's screened around the world. And I think that's something that that's something that more studios need to focus on in Pakistan and around the Asia Pacific region. All right, Celeste, Pakistan has also been producing some great content for kids and for adults too, and one of the recent examples was Donkey Raja, which was produced and translated and released worldwide too. Did you get a chance to interact with some of the people from the animation and gaming industry here in Pakistan? And if you have got a chance, what do you think about their skill, and what level are we as compared to the world? If you can please elaborate. I think there's a lot of potential here. Pakistan I'm based in Tokyo, and currently in Japan we have an opposite situation to what exists here in Pakistan. So in Japan we have a declining kids population. In Pakistan you have an enormous population of kids. I believe the actual demographic metrics are like 0 to 15. I think it's like 40% of the population, if I'm not wrong. So there's enormous opportunities here for animated kids content, and Donkey King I think is one great example of creating compelling original content, for that market. But I think there's a lot of room for a lot of other genres and subgenres in the kids space. For example, preschool, bridge, 8 to 12 age range, for example, and exploring a lot of other mediums too. We're glad to hear that you saw a lot of potential here. Now, we would like to, know about your experience here in Pakistan, and also you had a town hall meeting recently. How did that go? There's a lot of proactive activity happening in the animation industry here. For example, the IT park, the DHA's IT park in Karachi. And also to discuss with local content creators, like what are they making, what are their future plans, what's their long range plan in terms of a kids content industry, which is my specialty being kids, and I see a lot of really proactive fantastic things going on in that space. Lovely to hear that. Thank you so much, Silas, for speaking with us. इसी पे हमारे एक और भी गेस्ट हैं, क्योंकि हम ज़रा देखना चाहते हैं कि मज़ीद जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें वो क्या कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में बात करेंगे। इमरान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, पोटेंशियल तो साइलस भी कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें? क्या एवेन्यूज़ अभी दस्तयाब हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लिए क्रिएट करनी चाहिए? की और गेमिंग के पोटेंशियल की पाकिस्तान में, तो देखें इस पर काफ़ी अरसे से काम हो रहा है और काफ़ी अंडररेटेड ये इंडस्ट्री है, लेकिन अब उभर के सामने आ रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रही हैं। अगर आप बात करते हैं AGG, जो एनिमेशन गेमिंग और ग्राफिक्स सब कमेटी है पाशा की, वो काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रही है और गेमिंग एनिमेशन को आगे प्रोपिगेट कर रही है कि और इंडस्ट्री में लेके जा रही है, बता रही है लोगों को कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें क्या क्या पोटेंशियल है एज अ स्टूडियो वालों के लिए
لیے اور کیا کیا پوٹینشیل ہے جو کہ اس انڈسٹری میں آ کے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں. جو ہمارا ٹاؤن ہال کی جو بات ہے جو منڈے کو ہوا تھا ہمارا کریٹو پاکستان اور کسٹم نٹس کے ساتھ مل کے, وہ بیسکلی یہی بات کرنی تھی کہ ہمیں گیمنگ میں, اینیمیشن میں, ای اسپورٹس میں کتنا بڑا پوٹینشیل ہو رہا ہے, کتنا بزنس آ رہا ہے. پرائمریلی جو اس کا کور تھا وہ تھا انٹلیکچوئل پراپرٹی, کیونکہ جو ہمارا فوکس ہے, جو میرا فوکس ہے, جو کریٹو پاکستان کا فوکس ہے وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. آئی پی بننی ہے, کیونکہ آئی پی بیسکلی ویلیو کریشن ہے جو کہ سالوں سال جیتی ہے, جاگتی ہے. والا جیٹ آئی 70s میں, اور پھر لیجنڈ والا جیٹ آئی, اور اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ ٹرانس میڈیا فارمیٹس آ رہے ہیں, گیم بھی آ سکتے ہیں, مرچنڈائزنگ بھی آ سکتی ہے. تو وہ چیز ہم سے کوئی نہیں لے سکتا. جو ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی, ہماری کہانی ہے, وہ کوئی بھی ہم سے نہیں لے سکتا. بہت شکریہ عمران اظہر جو کہ ہیڈ ہیں کریٹو پاکستان کے.